Hello, students. Today, I am here with a new chapter, Employment in India, Growth, Informalization, and Other Issues, Problems and Policies. This is the seventh chapter of your Indian economic development. In this chapter, we will discuss the types of unemployment and what is employment in rural areas. The main content of this chapter is the meaning and employment, meaning of employment, workers, nature of employment, informalization of Indian workforce, employment in formal sector, employment in informal sector, meaning of unemployment and unemployment, underemployment. All these topics would be discussed in this chapter. Now, the first issue is, what do you mean by a worker? Who is a worker? Anyone, all those persons which are engaged in economic activities are known as workers. Now, what is economic activities? Any activity done to earn their livelihood is known as economic activity. If we just see the data of the population in 2004-5, the total number of men which were unemployed were 50.3, women 17.6, total 33.8. In rural areas, it was 48.8. Women's it was 21.6 and 35.2. It was total. In urban areas, it was a bit higher as compared to the rural areas. As we know that in rural areas there is unemployment problems are there. Overall, if we see the total in graphical phase, we can see that the total in urban areas, the more number of peoples are working. In rural areas, mostly they are women as compared to in rural areas, because women get work in rural areas. Now, employment. It is a situation in which a person goes for work for a fixed period of time for a particular and get salary or wages in return. This is the definition of employment. Employment can be of different types, like here you can see that employment is seasonal employment and disguised employment. Seasonal employment means some people, they are getting work in a particular season of a year, like when crops are harvested or when crops are sown. Then disguised employment means if more number of people are being employed as compared to the requirement of that particular work, then it is disguised employment. It seems that is as if they are working, but actually they are not required. The total output do not increase even if they are removed from the working place. Nature of employment in India is multi-faced. Some gets employment throughout the year. Some are employed for a few months or a year. Many workers do not get fair wages. So we have different types of unemployment. Types of workers. Some workers are self-employed, like someone if he or she is selling vegetables, or one who is a rickshaw puller. They are self-employed. Some are regular, some are casual. Casual means sometimes they are getting work, sometimes they are not getting work. Regularly salaried means they are regularly getting salaries. If we see the trends from 1972 to 2000, self-employed was 61.4. It has decreased in 2000. In regular, it is around 15.4 in 1972-73, and in 2000, 1999-2000 is 14.6. Casual workers, it has increased around to 32.8%. Self-employed, graphically, we can see that the largest number of people are self-employed, mostly in India, graphically. Formal organization, now the people, those who are working on the basis of their working place, they can also be said as they are as if they are working in self-employed
or they are known as they are working in formal or organized sector or unorganized sector. Actually, what is organized sector? Organized sector is a type of sector in which people get fixed salary, they get fixed wages, and they get some better facilities like medical facilities, and job securities are there. Informal sector or unorganized sectors, they are just mostly um, private sectors. Their job security is not there, they are not getting medical facilities, they are uh, and some HRAs, house rent allowance, such facilities are not even they are not getting pensions and all this. Then features of informal sectors do not get. Informal sectors में क्या होता है, रेगुलर इनकम नहीं मिलती, प्रोटेक्शन नहीं है गवर्नमेंट से, और उनको कभी भी डिसमिस किया जा सकता है बिना किसी कंपेंसेशन के। वर्कर्स मोस्टली जो है स्लम एरिया में रहते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम होती है। फॉर्मल सेक्टर में रहने वाले जो है वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स सैलरी होती है, उनकी यूनियंस भी होती है, मेडिकल लीव भी मिलती है, फ्यूचर के लिए सिक्योरिटीज भी हैं, स्किल उसमें रिक्वायर होता है। ये हमारे पास कुछ डाटा है पिछले कुछ सालों का। अगर हम देखें 1999 2000 में प्राइमरी सेक्टर्स में रूरल एरियाज का ये डाटा है। इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, अर्बन में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर्स में है, मेल ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर्स में, और आपके फीमेल्स में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में लगभग 75.1 है जो प्राइमरी सेक्टर में है। दैट मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर ज्यादा फीमेल्स को वर्क देता है, mostly because they are uneducated and skill is not required in that particularly. This is the distribution of workforce, primary sectors, and this is the data that you can see also from your book that is given there. Then we have two more terms, casualization and informalization. If casualization means it refers to situations when percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise. अगर जैसे जैसे समय बीतता है और कैजुअल वर्कर्स के नंबर्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स बढ़ते हैं तो उसको कैजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ को अगर लोगों का ज्यादा बढ़ता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन increasing towards informal sector, so informalization refers to situation when people tends to find employment more in informal sector in the economy and less in formal sector. अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है वन इफ समवन इज अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation when all able and willing people जो कर सकते हैं from age from 14 to 60 they are willing to work but they are not getting work, then only they will be termed as unemployed. If someone is even not willing to work, then he will not be termed as unemployed. Or if he is willing to work but he is not willing to work at the existing wage rate, then also he will not be termed as unemployed. Then this is the data of unemployment from 1990 to 97 in the 8th 5-year plan, then 9th 5-year plan, and in 2007 to 12 we can see 11th 5-year plan, the number of unemployed people was more. It has increased casually. Now we will discuss the causes of unemployment. Unemployment फर्स्ट इज फॉल्टी अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, दैट गवर्नमेंट की प्लानिंग सही नहीं होती है, जिसमें जो टोटल वर्कफोर्स है वो ज्यादा तैयार होती है लेकिन उनके लिए आगे के फ्यूचर के लिए उन लोगों के पास प्लानिंग्स नहीं होती हैं। गलत प्लानिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एम्फेसिस ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स और प्रोजेक्ट्स, जब दो तरह के काम किए जाते हैं, एक लेबर इंटेंसिव एक कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में मशीन से काम कराया जाता है, तो जब कैपिटल इंटेंसिव की तरफ को जाते हैं तो इंडिया बीइंग एज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, जब वो बाहर की टेक्नोलॉजी लाते हैं तो सीधी सी बात है लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है।
फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। स्लो ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री, अगर फास्ट ग्रोइंग होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर स्लो ग्रोथ प्रोसेस होना भी एक कारण हो जाता है। देन इंक्रीज इन लेबर फोर्स विद राइज इन पॉपुलेशन, जब लेबर फोर्स बढ़ती है तो उसकी वजह से भी, लेबर फोर्स के बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम राइज होती है, जब ज्यादा लोग तैयार हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज कम होती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, दो तरह का ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। अगर हम देखें रूरल एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन मीन सबको दिखाई दे रहा है और वो खाली बैठा हुआ है, तो ओपन एम्प्लॉयमेंट है। सीजनल होता है, जब सीजन्स में काम होता है, जब सीजन्स में ऑफ सीजन होता है तो काम नहीं होता, दैट इज नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। Disguised employment, large number of people, if they are working in a particular area then required, then that is disguised employment. Urban employment, it can be industrial employment, educated unemployment और technological unemployment। टेक्नोलॉजी नहीं आती है, एजुकेशन नहीं है, तो इंडस्ट्रीज में जब हम जो काम करने वाले लोग हैं वो काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इंडस्ट्रीज पे, अर्बन एरियाज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का असर क्या होता है, इससे गरीबी आती है, इससे डिप्रेशन की कंडीशंस होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होता है, समाज में सोशल अनरेस्ट होता है, उससे लोगों में चोरी और बहुत सारे जो इविल्स हैं वो जनरेट होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे आर कंपेल्ड टू डू सम इलीगल एक्टिविटीज। नाउ वी कैन how we can solve the problem of unemployment. We can first, the very first thing is the poverty population. As we know that we are the largest number of population holding countries, so we have to control the population. Then education reforms should be made in such a way that better skill can be generated. Farm activities can be diversified. We can go with some other activities along with the traditional farms activities. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जितनी जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी जल्दी हम उनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी शुरू की थी, जैसे नरेगा था, और उसके बाद नरेगा में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज देने की बात की गई थी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स नरेगा का क्या था कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये 2 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 days of assured work would be given in rural areas। बाद में इसका नाम बदल के इसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया है। So this is all about the employment and unemployment. Thank you.